ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वुस्ता इजराइल ख़त्म हो जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरान जब हमसे बात करता है तो यही कहता है कि अब हमारा कोई चांस नहीं, मेरे सिवा कोई भी 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ही ख़त्म कराई। They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We blew up their nuclear potential. It was obliterated for those that Iran has no chance. They never did. They know it, the whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news, has no credibility. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वुस्ता इजराइल ख़त्म हो जाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि ईरान के पास अब कोई चांस नहीं। ईरान जब हमसे बात करता है तो यही कहता है कि अब हमारा कोई चांस नहीं, मेरे सिवा कोई भी 8 जंगें ख़त्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने ही ख़त्म कराई। They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We blew up their nuclear potential. It was obliterated for those that Iran has no chance. They never did. They know it, the whole thing. And then I read the papers and they say how well they're doing. They're not doing well. That's why you have no credibility. No credibility. The news, the fake news, has no credibility. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war.